Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, our today's topic is nominal versus effective or true interest rate as the compounding frequency increases more than once in a year. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी फ्यूचर वैल्यूज को कंप्यूट किया था बाय यूजिंग एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली एंड कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। हमने उस एग्जाम्पल में प्रेजेंट वैल्यू 1000 रखी, इंटरेस्ट रेट 10% रखा और नंबर ऑफ इयर्स इन विच द वैल्यू इज टू बी कंप्यूटेड कंपाउंडेड, दैट इज 5 years. As we know, if m is compounding frequency, then we compute future value is equal to present value multiplied 1 plus I over m whole power n multiplied n. Now our today's the purpose of this lecture is to realize that why the future value increases if we compound from annual to daily and in continuous. If the compounding frequency increases more than once in a year, then what happened? That we had seen that future value is increased from 1610.51 to 1648.64. It means the value that can maximum be compounded, that is 1648.64 by continuous compounding, as we discussed in the previous lecture. आज हम देखेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नंबर वन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड सेकंड ट्रू इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है कि वो रेट जो बारोअर और लेंडर के दरमियान एट द टाइम ऑफ द डेट एग्रीमेंट डिसाइड किया जाता है, जबकि ट्रू और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज दैट रेट विच इज एक्चुअली अप्लाइज। हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को बड़ी आसानी के साथ कंप्यूट कर सकते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर एम होल पावर m माइनस 1। अगर हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग यूज कर रहे हैं तो फिर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को e रेज पावर i माइनस 1, जबकि जो मैथमेटिकल वैल्यू है e की वो 2.718 है। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, हमने ये देखना है कि एक्चुअली इंटरेस्ट रेट, ट्रू इंटरेस्ट रेट बिहाइंड दिस सीन क्या अप्लाई हुआ है। हमें पता है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी फॉर एनुअल इज 1, फॉर सेमी एनुअल इट इज 2, फॉर क्वार्टरली इट इज 4, फॉर मंथली इट इज 12, फॉर वीकली इट इज 52, फॉर डेली इट इज 360 और 365 days. For continuous compounding there is no frequency. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि इसको डिफरेंट कंप्यूटेशनल फार्मूला से कंप्यूट किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.718। Now we know the nominal interest rate that was 10%. We write here 10% and because it is 10% for all values, then we have to compute. Our today's main interest is to compute the true interest rate, or we say effective interest rate. For effective interest rate, we know that
is equal to 1 plus I divided by M. We close this function in first instance here, and then it will be added to 1, then its whole part is M value, again closed, then minus 1. It is 10%. So we drag it up to the last value, but exponential function the last. For exponential function, it is equal to e raised power I. We will use this computation now. For all previous computation, we use this formula, and for continuous compounding, effective interest rate will be computed by this formulation. Power is I, close this function. Dear students, it is very necessary to see this, how this function will be performed and how it will be modeled. And it is 10.5159%. अच्छा, अब हमारे पास जो सूरत हाल है कि 10% तो डिसाइडेड रेट था, लेकिन जो वैल्यूज फ्यूचर वैल्यू की यहां से लेके यहां तक बढ़ी हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये 10% से एक्चुअली अप्लाई हुआ है 10.5159% अप टू up to the value of 1,648.64. तो उसके पीछे पे जो ट्रू इंटरेस्ट रेट अप्लाई हुआ है वो 10.5159% अप्लाई हुआ है. अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है कि एनुअल में तो 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और ट्रू इंटरेस्ट रेट जो है वो दोनों सेम है, लेकिन जो ही कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो जो ट्रू इंटरेस्ट रेट है इट राइजेस and maximum it is risen up to 10.5159% because continuous compounding is the last compounding element. The maximum compounding we can perform, that is through continuous compounding. Look, let's see the difference. True interest rate minus nominal interest rate. It is the difference which has been actually applied. Now let's see it on a graph. We put the frequencies, then we use nominal interest rate and effective interest rate graph. We move towards the line graph and we can see it's very clear. We can enlarge it. Dear students, see this. Nominal interest rate remained constant, but the true interest rate which is actually applying behind the scene, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम 1 से बढ़ा के जो है वो आगे लेके जाते हैं मोर देन वंस इन ए ईयर, तो हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो ये नजर आ रहा है, और एक हमारे पास जो है वो टर्न यहाँ पे आके जो है वो मैक्सिमम कंपाउंडिंग जो है वो हुई है और वो रेट है 10.5159%. So it's very clear from annual to semi-annual to quarterly to monthly to weekly to daily and to continuous, the maximum true interest rate is 10.519%. So it's very clear from this mechanism that when we use
compounding frequency more than once a year from annual to continuous compounding, the true interest rate increases up to its maximum limit of the continuous compounding. So thank you so much for listening this topic.